and I never apart. Wave of the sea, dissolving the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. So do thou, my Lord. So do thou, my Lord. Thou and I never apart. Thou and I never apart. Wave of the sea, dissolving the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. Wave of the sea, dissolving the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Good evening and namaste, my dear friends. Welcome to today's class on Patanjali's Yoga Sutras. Let us begin the session with a prayer. Heavenly Father, Divine Mother, Friend, Beloved God, Bhagwan Krishna, Jesus Christ, Mahavatar Babaji, Lehri Mahashai, Swami Sri Yukteswar Ji, Beloved Gurudev Paramhansa Yogananda Ji, Saints and sages of all religions, humbly we bow and touch thy feet. We bow too at the feet of the sages Vedvyas, Patanjali, and Adi Shankaracharya for their exposition on the Yoga Sutras. Beloved Lord, help me to know that I am an immortal child of Thee. Remind me that I am living only for a little while in this caravanserai of the body. I am here to behold the tragedies and comedies of this changeable life with an attitude of unchangeable happiness. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let us invoke the presence of the Gurus.
and originally in Bengali, but translated into English by Paramahansa Yogananda. And with this, let's open the door of our heart. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me, Lord. Wilt thou come, just for once come to me. Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee, night and day. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me, Lord? Wilt thou come, just for once come to me? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Door of my heart, open wide I keep for thee. Wilt thou come, just for once come to me, Lord? Wilt thou come, just for once come to me? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, Lord, night and day, I look for thee, night and day. Let's take a moment of silence and open the doors of our heart and mind and turn the key of willingness. Willingness to say yes to life, willingness to put out the extra energy, to get out of our little human comfort zones, and willingness to say, I surrender to thee, my Lord, and thee alone. Let us hear a few thoughts on willingness. I request everybody to please check if they are on mute. Willingness must be cultivated deliberately.
It is an attitude of mind and depends not on outward conditions. Most people are willing or unwilling, depending on their likes and dislikes. This habit tends to develop a bias towards unwillingness, which gradually becomes chronic and attracts to itself chronic failure. Don't wait for favorable circumstances to awake willingness in you. Train yourself in the attitude of saying yes to life. Often by this simple attitude, you will find success arriving unexpected at your door. Let us do this following affirmation. We will first do it. Just give me a moment, please. I'm getting some disturbance. Okay. So we'll first read out the affirmation loudly, then go slowly in a whisper, and then mentally. And the affirmation is supposed to awaken the intelligence of not only our brain cells, but also the cells of our entire body. Every cell of our body has its intelligence, and the energy of the body has its intelligence, and it knows what it should do. But we need to reawaken that energy by increasing and improving our willingness. So let us do this affirmation. I welcome everything that comes to me as an opportunity for further growth. I welcome everything that comes to me as an opportunity for further growth. I welcome everything that comes to me as an opportunity for further growth. Go deeper within yourself and mentally follow the affirmation. I welcome everything that comes to me as an opportunity for further growth. Mentally offer this prayer. Lord, help me to overcome the satanic pull of unwillingness. The more I embrace life in your name, the more I feel your joy. That is the first take-home message of the day, that we say yes to life. And whatever comes in front of us, we just accept it. And we don't wish that it was different than what it is. We just see it from an open perspective. And instead of thinking that, oh, it would have been better if this person was like that, or the situation was different, or maybe I was different. No, you are perfectly fine, perfect, unique creatures, the children of the divine light. And if we just accept the situation as it is now, and we just say yes, and we put out the energy to learn what life is offering us, then it's a win-win situation. So we come with joyful willingness to the study of the Yoga Sutras, and we will do Sutra 8 today, but just we'll take 2 minutes to revise what we have done earlier. So in the beginning, Patanjali says, Yogas Chitta Vritti Nirodha, means yoga is the neutralization of the vortices or the whirlpools or the waves of the mind stuff or waves of feeling. Now, again, important it is when we say consciousness, when we say mind stuff, it includes 4 different aspects of the human mind or of the cosmic mind. And these 4 aspects are: 1, Manas, the perceiving mind, which receives all the data. Then is the analyzing and the discriminating mind, which is called buddhi or intellect. Then is the I aspect of this intelligence that works through us, the I-ness, the egoic self. That is called ahamkara. That is another aspect of our mind. It is a faculty and function of the mind given to us. And the 4th faculty given to us is the sense of feeling. So when all these get together, this is the mind stuff that we are made of, and this is the power that flows through this body.
and it makes the body function, and it appears on the outside that the body is doing various things, but actually it is the power of the mind with all these faculties which causes the energy to flow, which causes the matter to be in a particular way, and the energy of a life to have a certain blueprint. So what Patanjali is saying is that if this mind stuff is calm and still, then you will be in a state of yoga or a state of samadhi, and then you will attain the goal of life. In the next sutra, he says, which is the third sutra, he says that once you are able to neutralize, then you will know who you are. You will know what is your real self. You will know that you are more than the body, you are beyond the body and the prana and the mind. So unless you neutralize these waves and vortices, you would not know who you are. You will either get trapped in the body, or you may get trapped in the mental state of affairs, means the various thoughts that you have all the time. So you have to go beyond that state. And in the next sutra, he explains that if you do not neutralize the vrittis, then you get attached to these modifications, and you kind of just are always like a wave which is on the top of the ocean, and you are never able to understand that you are the ocean itself, or you are the depth of that ocean. And then in the next sutra, fifth sutra, Patanjali said that there are 5 types of vrittis or movements of consciousness. Some are painful and some are painless. And we discussed last time that how anger, jealousy, prejudice, these are painful vrittis in our mind stuff. And gaining knowledge, wisdom, kindness, compassion, these are they give us happiness, or they are non-painful, they are painless vrittis of our consciousness. And then the 5, he said, what are the 5 vrittis? He said there are 5 types. One is right knowledge, second is wrong knowledge, third is a verbal delusion, fourth is the state of sleep, and fifth is memory. And then he goes on further to say in the next sutra that the ways to attain right knowledge are threefold. One is pratyaksha, means direct perception. The other is anuman, or inference. And the third is agama, means the testimony of the saint, the testimony of the sage or the seer or the yogi who has attained samadhi, who has had a direct perception of God. And from that level of superconsciousness, he has written a scripture. So the scripture or the testimony of the sage who has attained God, and that is the Satguru, that is what is called agama, and that it can be a reliable source of right knowledge. Okay, so far, this is what we have done. Now he comes to wrong knowledge. He said the second type of vritti is wrong knowledge, and Sutra 8 says, Viparyayo mithya jnanam atadrupa apratishtanam. इसका क्या अर्थ है? हम एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे. Viparyayo means indiscrimination or wrong discrimination. Mithya jnanam is false knowledge. Atarup is not in the form of, and pratishtanam reality. तो इसको simply Swami Kriyananda ji ने कैसे explain किया है? He says wrong understanding is mistaking the true nature of that which is being considered. So जो real nature है, जो किसी भी object का आप जो real nature है, वो आप उसको mistakenly आप उसकी knowledge gain कर रहे हो, that is viparyayo. So it is false conception of something which is not corresponding to what it actually should be. तो ये 3 तरह के हो सकते हैं. 3 तरह के कैसे कि जैसे कि सब कुछ है reality, लेकिन आप उसको perceive नहीं कर रहे हो, आप सोचते हो कि वो नहीं है. जैसे for example God. Now God is supposed to be the ultimate reality. There is something called consciousness. There is something called the absolute bliss. Now it is there. It is real. That is all the agama, all the scriptures have said that it is there. But you, with your limited way of thought, you don't think it is there. So that is also one way of wrong knowledge. The other way of wrong knowledge is कि कुछ नहीं है. There is something which is not there, but you think it is there, and that is like a mirage. तो मिराज हमें पता है कि दूर से नजर आता है कि पानी है, लेकिन वो होता नहीं है. लेकिन हमारी परसेप्शन जो है उसकी वो फॉल्स नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है. सो दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ विपर्या. द थर्ड टाइप ऑफ विपर्या इज कि एक चीज है लेकिन हम उसको एक अलग तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक रस्सी पड़ी है और हम सोचते हैं कि वो सांप है. सो मिस्टेकिंग अ रोप फॉर अ स्नेक is another type of viparya. So this is how in this world now you check your daily life and you see how many times you kind of mistake
you make such mistakes. For example, कभी कभी ऐसा यहाँ से कुछ एक बड़ी सी चीज गुजर जाती है, आपको लगता है oh my God, आइस के सामने से क्या निकल गया, but वो actually छोटी सी मक्खी या मच्छर होता है. So that's a false perception because it is too close to the eye. But yet again, the mind does perceive something which is not there. It perceives it differently. ऐसे लगता है कि कोई monster सा गुजर गया है आँख के सामने से. So this causes a movement of the mind stuff. The mind perceives something, then the intellect tries to analyze it, and then there's a feeling of fear comes in because you feel it's monstrous, and then you come to the conclusion that I am afraid of whatever it is. So all of that comes in viparyayo, and it leads to mithya jnanam, means it leads to false knowledge. Swamiji explains that, even in meditation, sometimes you get visions, and it's important that you differentiate between a true vision and a false vision. And he has given us some pointers as to how do we differentiate. So there are 2-3 characters. The first and foremost is that what was the state of your heart, the feelings of your heart? Was there calmness or was there restlessness when you had that vision? So if the vision came to you when your heart was restless, then most likely it is an hallucination or an imagination. But if it came to you when your heart was completely calm and your mental processes were calmed down, you were not involved in too many thoughts, then this vision came to you, then most likely it is going to be a true vision. The other characteristic of a true vision is that it kind of changes your consciousness. It uplifts you in some way. While a hallucination or an imagination or a false vision usually has no impact on your consciousness in the future, as in means you may temporarily feel excited that, oh my God, I think I saw something, but then eventually it doesn't change you in any way. And thirdly, and this is my own personal experience, that true vision usually are very clear in your consciousness. You can recollect them anytime. So they become very strong in your memory and you can recollect them at will. So these are ways to differentiate whether you're imagining yourself hallucinating or actually you have had a vision. And sometimes it may be unclear, sometimes you may not be sure, because I remember reading in Yogananda ji's book that once they were having a Christmas meditation, and a little boy who was meditating for the first time, he had a vision of Christ. And then after that, everybody stood in line to take Yogananda ji's blessing. And this boy he did not mention anything to anybody because he himself was in the thought that maybe, what I saw was not true. And then when he went, it was his turn for blessing. Yogananda ji remarked to the boy that it's good for you, you received the blessing of Christ today. So Yogananda ji knew that this boy has had a vision of Christ. And so sometimes even the perceiver may not fully understand, but if you look back and you feel that you were completely calm in that state, you got that vision and that it has stayed with you and that it did actually change your level of consciousness in some way, it did uplift you. So that will be a true vision as compared to a false vision. Okay, now very important. Swamiji says modern society is super restless. We all know. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. We are not shocked or surprised to hear this. And Swamiji says next is that modern society understands almost everything wrongly. जो आज की ह्यूमन बींग्स अभी द्वापर युग में अभी जो जी रहे हैं वो सब कुछ गलत ही समझते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा रेस्टलेस वाइब्रेशंस में रहते हैं. फॉर एग्जांपल टीवी है, लोगों के घरों में टीवी चलता रहता है, घंटों चलता रहता है, उससे कितनी सारा डेटा उनका माइंड परसीव करता है, इतना उनका इंटेलेक्ट जो है फिर उसको एनालाइज करने में लगाता है और फिर कोई इमोशनल जो ट्रेजेडी है उसमें अपने फीलिंग्स को भी इन्वेस्ट कर देता है. तो वो इतनी ज्यादा वृत्तिज वो अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड स्टफ में कि कामनेस कहाँ से आएगी. और जब तक कामनेस नहीं आएगी और वृत्ति को हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक हम योग स्थिति में अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे. सो स्वामी जी नेवर हैड एट आनंदा, nobody has a TV, in the ashrams nobody has a TV in their rooms. There may be a common TV sometimes for some news or something, but usually people don't keep televisions in the ashrams. And Swamiji said that I do have a radio, but I hardly listen to it because there is so much of extra data coming to you which you're trying to process. In that, you're missing the point.
You're forgetting what you were intention was, what you were supposed to do, that you have come here basically to know who you really are, that you are a child of God, that you are this divine light. ये जानना था हमने, लेकिन हमने इतनी ज्यादा वृत्तिज अपने माइंड स्टफ में क्रिएट कर ली, और जब वेव्स होंगी लेक में, जब मिट्टी होगी लेक में, तो उसका बॉटम नहीं नजर आ सकता. तो इसीलिए be careful. So again, what do we learn from this? That we should not always keep distracting the mind in reading something more, listening to all these things. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है, the other side of the coin is कि अगर आप स्क्रिप्चर्स को सुनोगे तो वो भी एक वृत्ति क्रिएट करेगा, लेकिन वो गुड वृत्ति होगी, और गुड वृत्ति जो है वो नेगेटिव वृत्ति को कैंसल आउट करने में हेल्प करेगी. So here is a choice that is being given to us. You have the sense organ of hearing. Now it's the free will and the choice lies with you कि आप उन कानों से क्या सुनते हो, आप अपने माइंड स्टफ में किस तरह का स्टोन फेंकते हो, किस तरह का रिपल क्रिएट करते हो. ये चॉइस केवल आपके पास है, कोई और इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता. अगर आप पूरा दिन जो है रेस्टलेस और इमोशनल चीजें ही करते रहोगे, तो इवेंचुअली व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट. आप पूरा दिन वही सोचते रहोगे. जो पर्सन पूरा दिन स्टॉक मार्केट के सामने बैठा रहता है, वो एंड ऑफ द डे और उसके सपने भी वैसे ही आते हैं, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात कर सकता है, because that is the data that has gone inside him and that is what's going to come out of him. जो पूरा दिन पॉलिटिकल न्यूज सुनते हैं, वो एंड ऑफ द डे में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं. जो इंटेलेक्चुअल स्टडी में होते हैं, वो पूरा दिन वही बात करते हैं. जो आर्ट और क्रिएटिविटी में होते हैं, वो पूरा दिन वही बात करते हैं. सो इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट. सो वही वृत्ति आपके अंदर क्रिएट होगी, उसी को फिर आप अपनी फैकल्टी ऑफ स्पीच से यूज करोगे, और फिर वापस इस दुनिया में यू विल थ्रो दैट वाइब्रेशन. So be very careful. The aim of yoga is to neutralize the vortices and the vrittis. So do not create unnecessary vrittis in your mind. And also yogi is supposed to be very, very alert about his or her feelings. So you have to watch. You have to watch, are your thoughts kind of getting entangled around a particular subject? Means and this is the whirlpool gets deeper and deeper. For example, if you are in a melancholic mood, तो आपका उस समय रॉक या पॉप सुनने का मन नहीं करता, आपका मन करता है कि ना मैं एक ट्रेजेडी मूवी देख लूं और ना मैं गजल सुन लूं. So this world is like that. Whatever energy you throw, it kind of acts as a soundboard. It magnifies that energy and it sucks you in. So if you are a yogi, if you are alert in your thoughts and your feelings, you will catch it when the thoughts and the feelings are downsliding, or they are making you sad and melancholic, or they are making you restless and anxious and worried and fearful. You will catch hold of it. You will, as a witness, you will say, oh, these thoughts are coming into my mind, into the lake or the sea of my mind. I can see that these vrittis are forming, but I am not them. I stand apart and I choose not to engage myself in negative thoughts, in negative emotions, and I choose consciously to just let go. And I can pick and choose. As a human, as a child of God, with that freedom of choice, I can pick the right vritti. In that moment in time, if you say, okay, let me listen to some spiritual music. I'm feeling a little down today. I will listen to some spiritual music. Let me uplift myself. Or maybe let me do some exercise. Maybe let me go for a jog. Let me go for a walk. Let me read some nice book. Let me listen to some audio file. So you have the right to choose and also a duty to choose. Choose correctly. The choice will come only when you are aware of where your thoughts and feelings are going. So beware of all the false perceptions that you are putting into your mind. And please check with yourself, are these perceptions useful? क्या ये आपको यूजफुल है कि आप बहुत ज्यादा न्यूज रोज सुनते जाओ, तो आपकी लाइफ को वो किस दिशा में लेके जा रहा है? कोई फायदा नहीं है. सारी न्यूज वैसे भी इतनी ज्यादा इमोशनल करके बेची जाती है. इट्स बेसिकली अ बिजनेस दीस डेज. इफ यू टेक आउट अ न्यूज़पेपर ऑफ 100 years ago एंड आज का आप लगा लो, तो उसमें सिर्फ नाम ही बदल सकते. स्टोरीज, ह्यूमन स्टोरीज हमेशा से वही रही हैं, वही रहेंगी. उससे आपकी लाइफ पे कोई अंतर नहीं आने वाला. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. ठीक है, हेडलाइंस पढ़ ली, यू गॉट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हिच इज आल्सो वेरी एसेंशियल. Nobody is asking you to be dumb. So as master said, saintliness is not dumbness. So don't be dumb, be smart and choose smartly. देख लिया headlines क्या है and that's about it. Then don't indulge in useless news again and again and the same discussions again and again happening. So you are responsible if there are negative vrittis in your mind lake.
then you are responsible. God is not responsible. Nobody else is responsible. Universe is not responsible. So please watch out. Okay. So Swamiji says very clearly, he says, wrong understanding is one of the main obstacles in life, everywhere, and especially on the spiritual path. One of the first needs on the spiritual path is right understanding. One must keep answering these questions in introspection. So जब भी मन भटकने लगे, these are the questions that Swamiji you say, you ask yourself, why am I on this path? And it is very helpful sometimes to remember, क्योंकि एक बारी आप थोड़ा time, you start doing your kriyas and you become a little more peaceful. आपको लगता है हाँ, things are going right now, and then you say कि let me just forget my practices. No, that's the trap. Because you should always remember what was it that brought you on the spiritual path. क्योंकि वो आपको पकड़ के रखेगा, वो आपके जो needle of attention है, वो उसको बार बार जो जैसे magnetic compass होता है ना, वो वापस उसको सही दिशा में मोड़ता रहेगा. So always remember this. Ask yourself, why am I on this path? Then next question that you must ask yourself, why did I want to live a worldly life? मतलब कुछ तो था, मैंने जब स्पिरिचुअल लाइफ सीख करी या मैंने एक हायर ट्रूथ सीख किया, तो मैंने क्यों किया था, क्या पेन था वो इस वर्ल्डली लाइफ से जो मुझे पुश किया, जिसने मुझे पोक किया टू सीक समथिंग एल्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट. देन आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू आई वांट टू फाइंड गॉड. पूछिए अपने आप से. जब भी मन भटके तो आप पूछिए अपने आप से, और इसका सिंपल आंसर तो यही है कि हम सब इस दुनिया में we are all seeking happiness and only God is that joy that we are seeking. It is the nature of God or our own Atman, that happiness is our own nature, and that is why we seek it. So remember that कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपने पहला कदम ही क्यों रखा था इस दिशा में. And then again, जब worldly name fame इसके चक्कर में पड़ने लगो, ask yourself, do I want only recognition, admiration, worldly respect and high position? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन मिलेगा, एडमिरेशन मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो जरूर मिलेगा, बट ये इवेंचुअली सारे डेड एंड है. इसके बाद आपका दिल फिर भी खाली रहने वाला है. ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज, ये बात कुछ ना कुछ हद तक ट्राई कर चुके हैं. Most of us have tried being well off in material prosperity, well off in intellectual prosperity, well off in some relationships, and somehow, and then we have discovered at the end of the road that it is a dead end, that the heart is still empty. And this is what Jyotish ji always, I just love when he says this. He says the heart as a whole, which only God can fill. तो आपके पास जो है बेस्ट घर हो दुनिया में, बेस्ट लोकेशन पे हो, बेस्ट स्पाउस हो, बेस्ट बच्चे हो, बेस्ट गाड़ी हो, 50 नौकर हो, अच्छे पेट्स हो, पर्सनल प्लेन हो, पर्सनल यॉट हो, और आपके पास डायरेक्ट मार्स पे भी एक और घर हो, मून पे भी हो, फिर भी जाके आपका दिल वही वैसे ही खाली रहेगा जब तक आप में आत्मिक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मैं अपने में ही संपूर्ण हूं, तब तक ये जो होल इन द हार्ट है ये भर नहीं सकता. इसीलिए वर्ल्डली सक्सेस के पीछे भागना कोई बहुत स्मार्ट चीज तो नहीं है, ऑल्दो दुनिया समझती है कि ये स्मार्ट चीज है बहुत, बट अगेन इफ यू आर इन अ रैट रेस, यू आर स्टिल अ रैट. सो it's a choice to pause and ask yourself why you are doing what you are doing, what is it that you really want from life, and what is it that satisfies your heart truly. So beware, जितनी भी wrong knowledge है इस दुनिया की, वो सारी हमें delusion की तरफ ले जाती है. वो हमें किसी ना किसी तरह से convince कर लेती है कि आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको इस दुनिया की चीजें ही चाहिए. इसीलिए it is very important to beware of what data you are putting into your system and what kind of vibration or vrittis are happening in your mind stuff. Okay. This brings us to the next sutra, Sutra 9, and this is also quite interesting. It says, Shabd Gyan Anupati Vastu Shunya Vikalpa. एक word क्या है? शब्द हम समझते हैं. शब्द is not just word, it also means sound here. Gyan is knowledge. Anupati is follows. Vastu is object. Shunya Vikalpa means it's a fictitious perception. It is a devoid thing, but it appears to be. So what it basically means is,
So vikalpa is when there is no corresponding or real object, but there is a verbal delusion. इसका क्या मतलब है? ये भी बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं. सिंपल बातों में, जब हम छोटे थे और हमें कोई फेरी टेल सुनाता था या हमें कोई हॉरर टेल सुनाता था, तो हमारे माइंड में एक एंजल बन के आ जाता था, या जो भी, जैसे सपोज कोई राक्षस एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारा माइंड एक राक्षस की इमेज बना लेता था अपने माइंड में ना. वो सिर्फ कहानी थी, असली में वो राक्षस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. लेकिन जब हमने सुना उसके बारे में, तो हमारे माइंड में एक मूवमेंट हुआ, तो हमारे माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो और फीलिंग्स ने एक इमेज बनाई अपने अंदर, और वो मूवमेंट की वजह से वो इट्स अ डिस्टर्बेंस इन द लेक ऑफ द माइंड. और फिर उसके बाद वो इतनी गहराई में पहुंच जाती है वो इमेज, कि कई बार हमें सपनों में भी वही सेम इमेज आने लगती है. सो इट गोज इनटू सो मच डेप्थ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. सो अगेन इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी वॉच अबाउट द डेटा दैट वी आर पुटिंग इनसाइड अस. सो दिस इज कॉल्ड विकल्प, दिस इज कॉल्ड वर्बल डिल्यूजन. एंड इसलिए आप क्या सुनते हैं, स्पेशली अगर आप गॉसिप सुन रहे हैं सारा टाइम, जिसका ट्रूथ आपको पता ही नहीं है, सो आप एक्चुअली आप विकल्प में जा रहे हैं. इतनी वृत्तिज आपके अंदर क्रिएट होंगी कि आप अपने ट्रू सेल्फ की तरफ कैसे जाओगे? यू आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. एब्सोल्युटली. सो बीवेयर, वॉच आउट. ओके. So again, इसमें भी the flip side is that you can consciously create good vrittis by listening to the scriptures, by listening to the voice of the saints and sages. Listen to the sound of Paramahansa Yogananda's voice, his talks. Listen to Swamiji's music. Listen to the narration of the Ramayana and the Mahabharata. ये मजाक नहीं है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप ग्रंथों को सुने, क्योंकि वो राइट वृत्ति क्रिएट कर रहा है आपके अंदर. वो राइट नॉलेज का डेटा आपके अंदर जा रहा है, आपके अंदर राइट वृत्ति क्रिएट कर रहा है, और वो राइट वृत्ति इवेंचुअली आपको सभी वृत्तियों को से पार लगने में हेल्प करेगी. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टेकिंग गॉड्स नेम, रिपीटिंग गॉड्स नेम, लिसनिंग टू गॉड्स नेम, एंड लिसनिंग टू द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर्स. दिस इज ऑल important, and we understand from this sutra how it is relevant to our life, and how it is important that we choose as to what we are listening and what we choose to kind of just shut away. Okay. Just give me a moment. Okay, so what is the difference between viparyaya and vikalpa? So it says viparyaya is the wrong idea about an existing object, whereas vikalpa is a fictitious idea about an object that does not exist at all. ठीक है, तो viparyaya में wrong knowledge है, लेकिन एक जैसे सांप, रोप पड़ी है, आप उसको सांप समझ रहे हो, तो ये रॉन्ग नॉलेज हो गई. और इसका विकल्प क्या है? आपने सुना किसी से कि वहां रोप थी, किसी ने बोला कि वो सांप है, और उस फिक्टिशियस सांप से आपको डर लगने लगा, ये हो गया विकल्प. सो दिस, just think of the science symptomology of the mind that Patanjali has explained. And if we were to just analyze what is being said here, you would be like, wow, wait a minute. What is happening, and what am I putting into myself, and what am I giving back also? So be very, very extra careful as to what you're listening and what your mind is imagining, and what you're creating out of it. Swamiji says, seek the truth always, under all circumstances, and do your best always to rid the mind of any temptation to justify itself. It is safest for the sincere seeker to assume himself in some way in the wrong and not to try defend himself again and again. So, इसका क्या मीनिंग, इस सूत्र से क्या बैठ रहा है कि जैसे कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, सपोज आपको कोई ट्रैजिक न्यूज मिली है, तो अब आप इसको एनालाइज करो कि आप उसमें इमोशनल हो रहे हो, कितने इमोशनल हो रहे हो उससे, कि आप अपने आप को खामखा ही आप इमेजिन करो कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या हुआ था. तो आपकी इमेजिनेशन जो है, दैट इज रनिंग वाइल्ड. नथिंग हैज हैपेंड टू यू. योर बॉडी इज सेफ, योर माइंड इज safe. Of course, it is not wrong to have compassion, but if a compassion is leading to emotionalism and melancholy in you, then what is the use? It's of no use. Compassion would be helpful if by staying calm you can be kind and be helpful to the other person. अगर आप खुद ही ड्राउन हो रहे हो तो फायदा क्या है? दूसरा ड्राउन तो हो ही रहा है, आप साथ में खुद ही ड्राउन हो रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए
अब दूसरा पर्सन अगर हमें कुछ कह रहा है और हमारे अंदर एंगर और इरिटेशन की वृत्ति जागरूक हो रही है, तो एक योगी जो है इस बात को एनालाइज करेगा कि मैं क्यों इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस वृत्ति, ये मैं अपने अंदर क्यों वृत्ति क्रिएट कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे एनालाइज करके, धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस ऑफ क्रिया, all these things will improve. And you know, all of those who practice Kriya Yoga know that your reactive process has changed over the years. You do not react immediately, you do not get angry immediately, that your sense of even mindedness and calmness has improved over the years. So all of this is going to help to know, to understand, to apply, and to live the teachings is what actually changes one's life. Okay, so next we go to the Sutra 10, and Sutra 10 says, Abhav pratyaya lambana vritti nirdra. तो अगर हम सिक्स सूत्रा पे जाएं तो उन्होंने कहा था राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, वर्बल डिल्यूजन, निद्रा और मेमोरी, ये 5 तरह की वृत्ति हैं। तो इस 10th सूत्रा में पतंजलि जो है निद्रा के बारे में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो स्लीप है, it is a vritti that embraces the feeling of voidness, and it kinds of creates an attachment to nothingness. That's what Swami Kriyananda is saying. So इसमें जो हमारे शास्त्र हैं वो बहुत एक important बात बताते हैं। वो कहते हैं कि sleep is not void of experience, but it is another kind of experience. It is an experience of absence, an experience of void, but it is not void of experience itself. यानी कि जो हमारी calm lake of mind है, उसमें sleep भी एक तरह का और experience है। और जो 3 states जो नॉर्मल एक इंसान में होती हैं, जैसे कि एक जागरूक अवस्था है, जैसे कि हम कॉन्शियस हैं, या एक सुषुप्ति की अवस्था है जिसमें कि डीप स्लीप में है, और एक स्वप्न वाली अवस्था है जिसमें जो ड्रीम वाली स्लीप है। सो नॉर्मली हर पर्सन की ये 3 स्टेट्स रहती हैं कि जागृत हो गई, सुषुप्त हो गई और स्वप्न हो गई। तो ये इसका मतलब सुषुप्ति और स्वप्न भी एक तरह की वृत्ति है, एक तरह का एक्सपीरियंस है। It's not that it is just absence. It is an experience also, because when you get up from your sleep, you do remember that how was your sleep. Was it good? Was it bad? Was it restless? So you remember that experience. So you should know that sleep is not an absence, and sleep is not, it's a pseudo samadhi, it's samadhi, because कहीं ना कहीं हम ये समाधि स्थिति के लिए कह रहे हैं कि वहां पे कोई वृत्ति नहीं है, लेकिन sleep itself एक वृत्ति है, but it's an experience of absence. This reminds me of that story of Raja Janak. I've discussed with you guys during the Bhagavad Gita classes, but I think it's worth to share it again. So this is a story about Raja Janak. तो वो अपने chamber में आराम कर रहे होते हैं. He's resting and sleeping nicely. So after some time, what happens is this guard comes running to him and he wakes him up and he says, do you know this so-and-so king has actually attacked our kingdom and that we need to do something? And of course, Raja Janak, he just gets up and he calls all his generals, and they discuss about the plan of the war, and they counter-attack and they try to defend. And the war goes on for some time, but eventually Raja Janak, he loses the war. Once he's lost the war, the kingdom has been taken. Now the other king says that normally in previous times they used to either kill the person or they used to imprison the person who has got defeated. But they say, okay, Raja Janak, you are a respectable king, so we will not imprison you or kill you, but you just have to go outside the boundary of this kingdom. So Janak just leaves his palace, he starts to go to the boundary of the kingdom. He's very tired, he's very exhausted. Nobody offers him food, nobody offers him water, because if they help him, then the current king is going to kill them. So then nobody even says anything to him. So he, in his state of exhaustion and in his state of depression, he, with a lot of difficulty, he just crosses the boundary of the kingdom. And as he goes to the other land, he sees that there is, a person who is offering food to the poor people. There's a long line. People are standing in a line and they are being given food. So he stands in the line, and as the line moves slowly, so now his turn comes. And when his turn comes, the person who's offering food, he just checks in the vessel and he says कि खाना तो खत्म हो गया, and थोड़ा सा बस जैसे starchy water पड़ा होता है, सिर्फ केवल वही रह जाता है,
और जो भी छोटा सा पत्ते का या जो भी डोना होता है उसके अंदर वो पर्सन राजा जनक को वो डाल के दे देते हैं, एंड दैट्स ऑल ही हैज. सो राजा द किंग थिंक्स ओके लेट मी हैव दिस, बट एज ही इज अबाउट टू हैव दैट, एक बहुत जोर से आंधी चलती है, उनके हाथ से वो छूट जाता है, वो गिर जाता है और पूरी तरह से टूट के और निराश होके जो राजा हैं वो गिर जाते हैं. और जब वो गिर जाते हैं उसी समय उनकी नींद खुल जाती है. So when he wakes up, he realizes he is in the king's chamber and he has just got out of bed. But Raja Janak is a very introspective yogi. He is one of the person, it is said, that who has achieved liberation, complete liberation by the path of karma yoga. So he is very wise and intelligent, and he is wondering. He asks himself कि ये सच कि वो सच, कि जो जीवन में अभी जी रहा हूँ जिसमें मैं राजा हूँ, एक पैलेस में हूँ, इस चेंबर में हूँ, ये सच है या वो सच था जो कि मुझे, जिसमें मेरे को फियर भी था, मुझे भूख भी लगी थी, मैं हारा भी था, मेरे अंदर सारी सेम इमोशंस थी, लोग भी थे, जगह भी थी, वो सच था कि ये सच है. और ये प्रश्न वो अपने आप से पूछते रहते हैं, ये सच कि वो सच, ये सच कि वो सच. उनकी वाइफ उससे मिलने आती है तभी भी वो यही प्रश्न करते रहते हैं. अगले दिन वो मिनिस्ट्री का काम करते हैं तभी भी वो यही प्रश्न अपने से करते रहते हैं, और कई दिनों तक उनके साथ ऐसा चलता रहता है कि उनके मंत्री भी सोचने लगते हैं कि इनको तो कुछ हो गया है. But he continues with that question, and after a few days, the sage Ashtavakra, he is passing through that place. So, and Ashtavakra is a wise man, he is a realized master. He knows what Raja Janak is going through. So Ashtavakra presents himself in the king's court, and of course the king offers him his seat, and he's sitting there, and जो राजा है वो अपने मन की दुविधा उनसे शेयर करते हैं. तो वो यही प्रश्न पूछते हैं, क्या ये सच है या वो सच है? तो अष्टवक्र कहते हैं, इन दोनों में से कोई भी सच नहीं है. तो राजा जनक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं, तो कैसे? तो फिर जो है अष्टवक्र एक्सप्लेन करते हैं. वो कहते हैं कि क्या जब आप अभी यहाँ पर हो तो क्या आप साइमल्टेनियसली वहां पर हो क्या? तो राजा जनक सोचते हैं कुछ मोमेंट्स के लिए, कहते हैं नहीं, अभी मैं यहाँ पे हूँ. और फिर वो पूछते हैं कि जब आप उस स्थिति में थे, स्वप्न में जो भी था, उस स्थिति में थे जब आप हारे हुए थे, क्या तब आप इस स्थिति में थे? मतलब वाज इट कॉरेस्पॉन्डिंगली को एग्जिस्टिंग? राजा जनक ही थिंक्स अगेन एंड ही सेज नहीं. तो वो मैं, मतलब वो जब ये था तो वो नहीं था, और वो नहीं था तो ये था. तो इसीलिए ये दोनों ही असत्य हैं. लेकिन सत्य क्या है? क्या तुम were you experiencing what was happening in that dream? Raja Janak says, yes, I was experiencing. And then Ashtavakra says, are you experiencing this situation when you are the king? And Raja Janak says, yes, I am experiencing. So what is the common thread between the two situations? The common thread is I. Means I exist. I exist in the conscious state, I exist in the dream state, and I exist in the sleep state. So the only truth is I, the Atman, which exists always. Rest all keeps changing. Now, this is a very deep truth, which is explained by Advaita Vedanta, which says you are the only reality. You, the soul, and not the body and mind or the personality. You, the soul, are the only reality that exists. And everything else is false. क्योंकि truth की क्या definition है? सच आप किसको मानोगे? क्या सच है और क्या झूठ है, इसका कैसे डेफिनेशन बताओगे? अल्टीमेट रियलिटी को आप सच कैसे करोगे? सो इसकी भी डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई है. दैट विच इज ट्रू इन एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड इन एवरी पॉइंट इन स्पेस, दैट इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आप आज गार्डन में गए, आपने देखा कि एक गुलाब खिला हुआ है. आपने कहा तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छी रियलिटी है, वेरी नाइस. आप 5 दिन वहां, अगले हफ्ते वहां गए और वो रोज नहीं था वहां पर, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ओल्ड होके खत्म हो चुका था. तो उस दिन की रियलिटी क्या थी? कि रोज नहीं है. तो जो रियलिटी आज है पर एक हफ्ते बाद नहीं है, वो सच नहीं मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट ट्रूथ. सच वो है जो हर समय सच होता है, हर जगह पे यूनिवर्स में सच होता है. एंड दैट रियलिटी इज ओनली गॉड. एंड गॉड इज व्हाट हु यू आर. द आत्मन, द सोल सेल्फ is God himself.
You exist always. अभी हम इस शरीर के थ्रू काम कर रहे हैं, अभी हम जागते सोते हैं और स्वप्न लेते हैं, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद भी हम नहीं मरेंगे. That's what we studied in the Bhagavad Gita. We cannot die. So, if we cannot die and if we are the only truth, then all that our mind is thinking right now is because of the false knowledge that we have gained from this world. And by listening to the scriptures and by listening to the truth of who you are again and again and again, you nullify that energy. And by the practice of Guru given techniques, you come to the realization of who you truly are. You are an eternal truth, and nothing can change that. Even if you at the moment in your mind think you are not that, that's a false perception. So, और अगर यही सच है कि हमने तो हमेशा ही एग्जिस्ट करना है, हम मर सकते नहीं, तो फिर खुशी से एग्जिस्ट करो ना, फिर दुख किस बात का मना रहे हो? बाकी सब तो चेंजिंग पिक्चर्स हैं. और इसीलिए ह्यूमन बॉडी को भी मिथ्या माना जाता है. 100 साल अभी के लिए सच है, अभी हमारा ये शरीर सच है, लेकिन 100 साल बाद ये शरीर नहीं होगा तो ये झूठ हो जाएगा. तो क्या हम इसको ट्रूथ मान सकते हैं? नहीं, ये अनरियल है. इट्स लाइक अ पासिंग शो, इट्स लाइक अ पासिंग मूवी. ये आया है एग्जिस्टेंस में और ये चला जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, बिकॉज हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम थिंकिंग माइंड नहीं है, हम इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस नहीं है, हम टेम्पररीली एक्सपीरियंस करने आए हैं इस दुनिया को. सो the attitude that we live in is that we are the light itself. We are the eternal soul. We are temporarily living through this human body and mind and temporarily experiencing this situation. अगर हम इस भाव से करेंगे तो इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जो जितना भी ड्रामा है और जितना भी मैं मेरा है वो सब चला जाएगा. ये सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया की, मैं मेरा. We actually came with nothing into this world and we will take nothing. कुछ नहीं जाने वाला साथ, और हम कुछ लेके भी नहीं आए थे. तो जिस चीज को भी मैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी वाइफ, मेरी जॉब, मेरे ये कुछ, it's a lie. It's a lie. So yes, you may need some temporary comforts. Create a small घोंसला बनाइए अपना, लेकिन उससे इतना मत चिपक जाइए कि जब घोंसले से बड़े घर में शिफ्ट करने का यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का टाइम आए, तो you have to be taken against your will. God is anyway going to take you out of this body someday or the other. Now question is कि आप willingly इस शरीर को त्यागोगे या आपको जबरदस्ती अगेंस्ट योर विश लेके जाया जाएगा, क्योंकि आपकी डिजायर और अटैचमेंट ही इस दुनिया से इतनी है, क्योंकि आप सोचते हो कि कुछ और है ही नहीं. और ये सारा कैसे हुआ है? Multiple human births, multiple wrong knowledge we have gathered, we have, and by choice we have traveled in this world of delusion. And God has always given us the choice to seek him. It's up to us. हाँ, ये चॉइस हमारे पास हमेशा से है, लेकिन हमने इस पे क्लेम नहीं डाला. अब जब हमने इस दुनिया में इनफ सफर कर लिया है, जब हमने पा लिया है कि पैसा भी, रिलेशनशिप भी, इंटेलेक्चुअल हाइट्स, ये सब एक डेड एंड है, जब हमने ये कहीं ना कहीं पा लिया है, हमारा दिल कन्विंस्ड है. अगर कन्विंस्ड ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते. कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये कहीं ये डेड एंड टाइप है. तो अब हम by choice, now we use our willingness, now we open the door and we say, now we come to the study of yoga, which is the first sutra of this book. And when we say we come to the study of yoga, then we become aware and we introspect and we watch what we are thinking, we watch what we are feeling, and then we change the direction. Everything that we do in this life on our daily basis should be in the direction of organizing our life in such a way that it takes us towards the light, it takes us towards the truth. अब आप अपने दिन को एनालाइज करो, आपका कितने जो कार्यवाही है वो आपको सच की तरफ लेके जा रही है और कितना आपको बॉन्डेज की तरफ लेके जा रही है. Truth will free you, the rest will give you pain. And the truth is that we are eternal souls. और इस बात को समझने के लिए इस बात को इतनी बार सुनना पड़ता है आपको बार बार कि वो आपके जो हर सेल्यूलर इंटेलिजेंस है ना, जो आपका डीएनए है, उसका हर मॉलिक्यूल ये मान ले कि आप एक डिवाइन लाइट हो और आप ये टेम्पररी रोल प्ले कर रहे हो. और जब आप टेम्पररी रोल प्ले करोगे तो ट्रेजेडी कॉमेडी कैसे टच करेगी? एक स्टेज पे एक एक्टर है, उसको पता है कि वो ये उसकी ट्रेजेडी मतलब वो प्ले कर रहा है कि हाँ उसके घर में कोई मर गया है, तो वो he doesn't have pain in the heart, he plays the role.
But if he doesn't know that it is acting, then he is all sadness. So if when we are awakened, the Guru comes to awaken us, to tell us that you are the light, you are not this role play. Remember who you are, come back home. When that happens, then we start to understand, we start to detach from the world, we start to control our emotions, we start to do all the practices that take us to the truth. And then we are set free. So the choice is ours. Do not underestimate your own power to change your life, to change its direction, to make yourself happy. You are the only one in this universe that can make yourself happy. Don't think the power lies anywhere else. That's a false perception. कोई गिफ्ट रैप करके आपको खुशी नहीं देने वाला, क्योंकि ये पावर किसी के पास है ही नहीं. आपको अपनी खुशी खुद ही क्रिएट करनी है, इन दिस मोमेंट क्रिएट करनी है. आप सोचिए कि वो कैसे करेंगे. आप में इतनी इंटेलिजेंस है कि यदि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज करें, तो आप ये भी जानेंगे कि वो खुशी आपको कैसे प्राप्त होगी. So these are the practical aspects of these teachings. They are just amazing. Okay, so we talked about the sleep and the sushupta state, and I think we will just go with one more sutra for the day. And that is sutra number 11. And now he comes to the memory, the fifth vritti that Patanjali talks about. He says, Anubhuti Vishya Sampramosha Smriti. क्या मतलब है इसका? Anubhuta means from the experience. Vishaya means content, क्या है उसका? Asampramosha, not fully disappear. Smriti, memory. So memory is that. अब इसको स्वामी जी ने इतनी simply explain करा है. Swami ji says, memory is clinging to any idea of object that returns to the mind. That means memory is when the vrittis that are perceived, they do not slip away from the consciousness and the impression comes back. तो यानी कि जो डेटा आपके अंदर आया वो आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ गया और वही सबकॉन्शियस से वो वापस कॉन्शियस माइंड में आता है. It keeps coming back. It has not slipped away from your consciousness. It has kind of got stuck there. It has kind of become a weed that will, even if you keep cutting from the conscious level, जब तक वो subconscious unweeding नहीं होगा तब तक वो निकलेगा नहीं. So that is what memory is. And इसके भी flip side, आप of course इतनी wrong perceptions, हम अपनी limitations of body and mind की वृत्ति बन चुकी है. यही हमें याद आता है कि हम तो शरीर ही हैं. लेकिन जब एनलाइटनमेंट आती है उसको भी स्मृति कहा जाता है. वो किस चीज की स्मृति होती है? एनलाइटनमेंट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ हु वी ट्रूली आर. हम वो हैं जो इटर्नल हैं, जो इन्फिनिट हैं, जो लाइट इटसेल्फ हैं. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ये भी स्मृति है, ये भी एनलाइटनमेंट है. बाकी सारी स्मृतियां जो हैं वो एक छोटे लेवल पे काम करती हैं, बट एनलाइटनमेंट एक ऐसी स्मृति है जो हमें बैक होम लेकर जाती है, जो हमें ट्रूथ पर लेकर जाती है. बट ये हमें हेल्प करता है समझने में कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है. तो हमने कोई सीन देखा, कोई सिचुएशन देखी, उसका एक रिपल हुआ हमारे अंदर, माइंड के अंदर एक लेक में मूवमेंट हुआ, तो वेव क्रिएट हुई. वो बार बार हमने उसके बारे में सुना या पढ़ा या देखा, रिपीटेड हुआ. प्लस हमने उसमें अपनी फीलिंग्स भी इन्वेस्ट कर दी, प्लस उसमें अपनी सेंस ऑफ आईनेस भी इन्वेस्ट कर दी. तो जो छोटा सा रिपल क्रिएट हुआ था वो बड़ी बड़ी वेव्स में बन गया. अब वो बड़ी बड़ी वेव्स जो बन गई वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम वैसा थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अफेक्ट होगा हमारी सबकॉन्शियस जो डेटा ऑलरेडी फीड हुआ है. तो अगर एक पर्सन को बार बार गुस्सा खाने की आदत है, इसी को हैबिट टेंडेंसी कहते हैं. इसीलिए कहते हैं कि वृत्ति जो है वो संस्कार बन जाते हैं और संस्कार जो है वो वासना बन जाती है, क्योंकि रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट जो है वो स्टोर हो जाता है आपके अंदर और फिर वो आपका फ्रीडम छीन लेता है. तो आप एक पॉइंट पे, जो लोगों को गुस्सा करने की इतनी आदत होती है, कभी ना कभी उनको पता होता है कि वो इरेशनल है गुस्सा करने में, लेकिन फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं होता अपना गुस्सा. क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस मेमोरी में एंगर हैबिट इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि वो कॉन्शियस डिसीजन को अब डिस्टर्ब्स. सो यू आर नॉट फ्री, यू आर बाउंड. वेयर इज योर फ्री विल देन? अगर आप एक पपेट की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड के डिक्टेट्स पे काम कर रहे हो, देन हाउ फ्री आर यू रियली? Hardly. So therefore we must watch it again, what we are putting in our mind, what we are storing again and again. क्या हम अपनी sense of victimization, this is very common, everybody in this world thinks that he or she is a victim,
और हम अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना यही कहते रहते हैं कि हो हम बेचारे, ओहो पुअर मी एंड ऑल दैट, दिस डू सेल्फ पिटी एंड ऑल दैट। ये इतना ज्यादा घुस जाता है हमारे अंदर कि हम एक्चुअली में सोचने लगते हैं कि हम बेचारे। वो सच तो पता नहीं कहाँ रह जाता है कि हम लाइट हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो सच तो भूल जाते हैं हम। लेकिन हम उस झूठ में जीने लग जाते हैं दैट आई एम दिस पुअर फेलो एंड आई एम इन अ स्टेट ऑफ अटर हेल्पलेसनेस एंड अब कुछ नहीं हो सकता। that is actually silliness. That is in a way it's stupid because this is not who we really are. तो जब इतनी बैड वृत्तिज बन गई हैं तो हमें क्या हेल्प करेगा? थिंग्स लाइक एफर्मेशन, the thing what we did in the beginning of the class, we tell ourselves the truth, so we affirm the statement of truth. I am a child of God, I am always protected by God, God will give me what I need at the time I need it. We tell, these are statements of truth. जिन्होंने ये बातें प्रैक्टिस करी हैं वो ये टेस्टिफाई कर सकते हैं, ये अगम है, ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। थॉट्स आर थिंग्स। तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें ये मानना, हमें बहुत क्लियरली चेक करना पड़ेगा कि हम अपनी मेमोरी में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरी भी वृत्ति बन के बार बार कॉन्शियस लाइफ में आएगी, वो आपकी फ्यूचर लाइफ को भी अफेक्ट करेगी और आपको क्लैरिटी से कभी भी नहीं जानने देगी कि आप असली में कौन हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक योगी अवेयर रहे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये उससे भी ज्यादा जरूरी है कि योगी आज ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड के लिए वो खुद ही जिम्मेवार है। इस दुनिया को ब्लेम करना बिल्कुल ही यूजलेस और वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि दुनिया की गलती नहीं है। आपको मेले में आने का शौक था, हम सबको था, इसीलिए हम इस मेले में हैं। समवेयर it is said in the scriptures that somewhere we have chosen to be in a human body. हमें क्योंकि ये मेला इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। तो लेकिन इतना इंटेलिजेंस गॉड ने हमें ये प्री प्रोग्राम करके भेजा था कि बेटा जब थक जाओगे ना मेले से तो तब ढूंढ लेना मुझे, मैं मिल जाऊंगा। अपने सच को खोज लेना, मिल जाएगा। गुरु को भी उस मेले में उन्होंने प्लांट किया कि आपको सच का शीशा दिखाने के लिए कोई मिलेगा जो आपको सही राह दिखाएगा, और उसके हाथ पकड़ के, उसके चरण पकड़ के आप इसमें से बाहर आ सकते हो। So with that thought, my dear friends, let's take a moment and let's just, with a straight spine, with gaze upwards and an open heart, let's take a moment to thank God for this complex but amazing life, that if we even take a moment to pause and wonder about, it cannot be even spoken in words. What a life God has created. What a system of mind and thinking and feeling, and what a complex game and what a complex picture this is. But He has also given us the intelligence to know that it is only a picture. It is only a movie show. And you yourself are ever existing and the only truth. Hold on to that. Hold on to that and live your life happily. Let us share the power of these teachings with souls everywhere. Divine Mother, Thou art omnipresent. Thou art in all Thy children. Manifest Thy healing presence in all bodies, all minds, all hearts, and all souls. Let's chant Om 3 times loudly, sending out love and energy to the whole universe. Om. 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 Divine Mother, may Thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken Thy love in all hearts. Om Shanti, Shanti,
Shanti. Thank you, my dear friends and great souls, for being my friends on this journey, co-travelers on this pilgrimage of life. If you have any comments or thoughts or any questions, we can address them right now. One thing I wanted to share, thanks for a lovely, awesome session and sharing. And there is one thing, as you're mentioning, what we should listen to. I had gone through, I read this Socrates triple test, which was conducted 2000 years before. When any information is coming, is it truth? Then is it good? Then is it useful for me? If anything is no, then please don't share it with me. So this is how our TV, what you were mentioning, TV and other stuff which comes on the social platforms, and especially on WhatsApp, we keep listening. So this is one thing. So that's what I wanted to share. That's absolutely correct. So we need to put filters in our mind of what the data we are receiving. And similarly, for speech also, Lord Krishna has said, before you are speaking, first check, pause and check within yourself. Is this the truth that I am speaking? Secondly, check, is it beneficial to the person that I am speaking to? Then third, check, is it pleasant? So if what you are going to say, it qualifies at these three levels, then it is better to speak. Otherwise, silence is gold. So these are filters that only a yogi who is alert of what he is doing, of his actions, जो compulsively और reflexively अपने काम करते हैं और अपने actions और speech पे कोई control नहीं रखते हैं, वो नहीं कर सकते. लेकिन जो pause करते हैं, जो analyze करते हैं, introspect करते हैं, वही ये filters consciously लगा सकते हैं. So yes, thank you very much, Joy, for that. Okay, any other thoughts? Okay, dear friends, thank you so much. Jai Guru to all. Have a blessed week. Joy. Thank you, ma'am. Wonderful sharing. Om Guru. Om Guru. Thank you.